before writing G, we will learn some words starting with G. Okay? Goat. G for goat. G says G. G for gate. G says G. G for gumboot. G says G. G for girl. G says G. G for guitar. G says G. G for gum. G says G. G for garlic. G says G. Now we have to do page number 19 and page number 22 in our EVS copy. First of all, you have to write your date, name and section in both the pages, okay? And here you have to write phonic sound of G, okay? G says G. Now look at here. Put a dot on the third line. Put a dot on the third line. आपको third line में dot देना है. Okay? Second step. Put a dot on the third line. Slant line up. Touch the second line and make a little curve. Next. Put a dot on the third line. Slant line up. Touch the second line and make a little curve. Come back with the same line. Touch the third line and go little up. It's like small cursive C. जैसे आपने C बनाया था वैसे ही आपको थर्ड स्टेप लिखना है. बहुत इजी है ये. ओके. फोर्थ स्टेप. Put a dot on the third line. Slant line up. Touch the second line and make a little curve. Come back with the same line. Touch the third line. Slant line up. Touch the second line. Slant line down. Touch the fourth line. आपको पूरा फोर्थ लाइन तक लाना है. कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ये यहीं तक. आपको ये फोर्थ लाइन तक टच करना है. ओके. डोंट डू लाइक दिस. इट इज रॉन्ग फॉर्मेशन. लास्ट स्टेप. Put a dot on the third line. Slant line up. Touch the second line and make a little curve. Come back with the same line. Touch the third line. Slant line up. Touch the second line. Slant line down. Touch the fourth line. Make a loop. Go up and cross the third line. You have to cross this third line. Blue line. इसको आपको क्रॉस करना है. ऐसे करके नहीं बनाना है. ये यहाँ नहीं छोड़ना है. This is wrong formation. See once again. Put a dot on the third line. Slant line up. Touch the second line and make a little curve. Come back with the same line. Touch the third line. Slant line up. Touch the second line. Slant line down. Touch the fourth line. Make a loop. Go up and cross the third line. Small cursive G. In this page you have to write only 6 lines. मैम ने आपको पहले भी बताया है कि आपको 6 लाइन ही लिखना है, लेकिन आप लोग पूरा पेज भर के सेंड करते हैं. आप पूरा पेज भेजेंगे, मैं 6 लाइन ही चेक करूँगी. 1 2 3 4 5 एंड 6. PW के नीचे वाली लाइन तक आपको लिखना है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 22. कंप्लीट फॉर्म ऑफ G. नाउ लुक एट हियर. G for goat. G says G. G for girl. G says G. G for grapes. G says G. G for gate. G says G. Now see some mistakes you do. आप लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं. बहुत लोग स्ट्रेट लिखते हैं. मैम ने आपको पहले ही बताया आप कर्सिव लिखेंगे, आपको स्ट्रेट नहीं लिखना है कोई सा भी लेटर. ये स्ट्रेट G. This is wrong formation. Nobody will write like this. Okay. And some of you write like this. ये लूप बना के ऐसे छोड़ देते हैं. This is wrong formation. Don't write like this. अभी मैम ने लूप बनाने बोला है तो कुछ लोग बहुत बड़ा लूप. ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट.
लूप बनाते हैं, आप बहुत अच्छे से जी लिखते हैं, उसके बाद ये सेकेंड लाइन में टच कर देते हैं। ये जो आप लूप बना के स्लैंट लाइन लेके जाएंगे, इसको आपको सेकेंड लाइन में टच नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड लाइन में टच नहीं करना है और यहाँ नीचे भी नहीं छोड़ना है, इसको थर्ड लाइन से क्रॉस करना है। यहाँ से क्रॉस करके आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। ओके, in this page also you have to write only 6 lines, 1 2 3 4 5 and 6. In both the pages you have to write only 6 lines. आपको दोनों पेज में 6 लाइन्स ही लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।